Yes, बच्चों, can you see the board? आनंद, रितेश, यूट्यूब पर दूसरा सेकंड ये दूसरी बार हमने स्टार्ट किया, वो पहले वाला डिस्कनेक्ट करो। रितेश, आनंद, पहले वाला डिस्कनेक्ट करो, वापस ज्वाइन करो। दिख रहा है? ओके, इज इट क्लियर नाउ? पिक्चर क्वालिटी राइट? Okay, thank you. So boys and girls, this is our first lecture of 9th standard, right? So in this chapter part ज्वाइन हो गया? ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, मेजरमेंट, राइट? सो why it is important? Because measurement, it is a routine part of our daily life. भैया हम लोग किसी को पैसे देते, उसे काउंट करते हैं ना? हम लोग किसी को बोलते कि भैया यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, व्हाट इज योर वेलोसिटी, और हमारा स्पीड इतना था। क्लियर? हमने किसी शॉप से अरहर की दाल लाया तो कितना किलो लाया? 10 किलो, राइट? या किसी सोने वाले के पास, गोल्ड शॉपकीपर के पास हम लोग गए और उसके पास से हमने गोल्ड परचेस किया, कितना तोला लिया, हाउ मेनी ग्राम्स, राइट? तो ये सब चीजें जो होती है बच्चों, टेम्परेचर आज का कितना है, कोटा में तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ना, नियर अबाउट, मतलब समर में तो 47 नॉर्मल बात होती है, राइट? 47 डिग्री सेल्सियस हम लोग बोलते हैं। क्लियर? टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट आल्सो, इट इज आल्सो मेजर इन केल्विन आल्सो। क्लियर? तो बच्चों फोर्स लगाया किसके ऊपर, कितना फोर्स लगाया, राइट? तो ये सब चीजें जो होती है हम लोग मेजर करते हैं। तो ये जो क्वांटिटी जो होती है, राइट, which can be measured are called as a physical quantity. तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं बच्चों लोग? लुक हियर, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? यस, वेरी गुड। quantities which can be measured are called physical quantities. Clear? Now boys and girls, how we can measure the physical quantity? When suppose if we want to measure the mass, then that time we can compare the mass of any body or any object with respect to other standard quantity like kilogram, milligram, gram, quintal, ton. These are the standard quantities with which that mass of a body is compared, and then it is counted. So that other standard quantities with which we compare the physical quantities are called as a unit. क्या कहते हैं बच्चों हम लोग इसे? यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जांपल बता सकते हैं आप लोग? एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज: मास, टेम्परेचर, टाइम, फोर्स, acceleration, yes, acceleration, speed, velocity, etc., density, right? Clear? These are the physical quantities. Now when we want to measure these physical quantities, then that time we have to compare this physical quantity with other standard quantities, and these other standard quantities are called as a unit. Clear? So what is by unit?
during measurement of physical quantities, we compare that physical quantities with other standard quantities, and that standard quantities are called unit. Example: kilogram, gram, Newton, dyne, easiest unit of force, dyne, joule, Kelvin, degree Celsius, mole. Mole is unit of amount of substance. Clear? So बच्चों देखो, ये जो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं इसको बाहर मत करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट और ट्राई टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज. क्लियर? जब तक हम लोग देखो, मैंने पहले यूनिट का डेफिनेशन दूसरे लैंग्वेज में कुछ तो भी डिफरेंट बोला था, अभी थोड़ा सा डिफरेंट लिखा, लेकिन मीनिंग इज सेम. मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. क्लियर? सो बच्चों, व्हाट इज मीन बाय यूनिट? Units are nothing but these are the standard quantities which are used to measure physical quantities. देखो अगेन डिफरेंट लैंग्वेज में बता रहा हूं. What I mean by unit? Units are the standard quantities which are used to measure physical quantities. Clear? पार्थ, आनंद, रितेश, समझ में आया बच्चों? हेलो. सो बच्चों, नाउ अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानकारी लेंगे. चला रविट? अगर आपने कुछ समझो बोर्ड के ऊपर का आपका लिखना रह गया तो आप लोग वापस YouTube देखकर वहां पर स्क्रीन स्टॉप करके यू कैन राइट. ठीक है ना? बिकॉज इट इज अपलोडेड ऑन, इट विल बी अपलोड on YouTube also and it will be there forever. So बच्चों, physical quantities are divided into two types. Physical quantities are divided into two types. On what basis? On the basis of magnitude and direction. On the basis of magnitude and direction. मैग्नीट्यूड हमें बच्चों क्या रिप्रेजेंट करता, मतलब हमें क्या शो करता है, क्या दिखाता है? हाउ मच. हम लोग यहां से समझो, सपोज वी ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. हाउ मच डिस्टेंस यू आर ट्रैवल? दिस इज डिस्टेंस. दिस इज डिस्टेंस, राइट? तो कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया? मान के चलो 10 किलोमीटर. सो दिस 10 किलोमीटर जब हम लोग बोलते हैं कि भैया हम मतलब कुनाड़ी जहां पर संज्ञान वगैरह है ना, राइट, सम्यक है, कुनाड़ी एरिया कोटा, वहां से मान के चलो हम लोग तलवंडी आ गए, राइट? तो हाउ मच डिस्टेंस वी हैव ट्रैवल? चलो मान के चलो 10 किलोमीटर. क्लियर? कुनाड़ी से नयापुरा होते हुए हम लोग
राइट, किधर आ गए, तलवंडी आ गए, मान के चलिए हाउ मच डिस्टेंस वी हैव ट्रैवल 10 किलोमीटर। मान के चलिए बेगूसराय से हम लोग सिवान चले गए बिहार, राइट, हाउ मच डिस्टेंस वी हैव ट्रैवल फॉर एग्जांपल 300 किलोमीटर। सो ये 300 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हाउ मच डिस्टेंस वी हैव ट्रैवल, व्हाट इज द टेम्परेचर। अभी अपना आपके पास कोटा में टेम्परेचर कितना है, मान के चलिए 25 डिग्री सेल्सियस, राइट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार 10 मीटर पर सेकंड। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि भैया वो यूनिट जो भी है, राइट, व्हाट इट शोज, हाउ मच दैट फिजिकल क्वांटिटी। सपोज वी हैव परचेज शुगर 3 किलोग्राम, आपने बोला सर हमने शुगर परचेज किया, हाउ मच 3 किलोग्राम, देयर ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द मास ऑफ द शुगर। सो हाउ मच मींस मैग्नीट्यूड, how much means it is shown by magnitude, क्लियर, ठीक है ना बच्चों, मैग्नीट्यूड का मीनिंग समझ में आ गया आपको। मैग्नीट्यूड से क्या पता चलता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, राइट, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट इट हाउ मच द फिजिकल क्वांटिटीज। सो बच्चों कुछ फिजिकल देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल 2 किलोग्राम ऑफ शुगर, 2 kilogram sugar means this 2 kilogram it represent mass of sugar, it represent mass of sugar। तो ऐसा तो जरूरी नहीं बच्चों कि आपने समझो कोटा से फॉर एग्जांपल आपने नयापुरा से शुगर परचेस किया, हाउ मच 2 किलोग्राम, तो वहां पर तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आई हैव परचेज शुगर फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इधर द डायरेक्शन अगर समझो आपने उसका बोल दिया तो क्या उसका वैल्यू चेंज होता है क्या, नहीं। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बोलने की जरूरत नहीं कि हमारे रूम का टेम्परेचर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से 25 डिग्री सेल्सियस है, जरूरी है क्या डायरेक्शन बोलने की, नहीं, क्लियर। स्पीड, हमारा स्पीड समझो मान के चले वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू कन्याकुमारी, हमारा स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर। सो बच्चों लेंथ मान के चले कि आपके रूम का लेंथ जो है समझो एक द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल, हाउ मच दैट लेंथ इज 3 मीटर, 5 मीटर। सो उससे उसका पूरा वैल्यू हमको पता चलता है ना, डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है ना, राइट। सो द फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्रेस्ड बाय ओनली हाउ मच मींस बाय ओनली देयर मैग्नीट्यूड, लेकिन देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच we cannot express it completely by using magnitude, its magnitude, we require magnitude, at the same time we require direction also। for example ये तो distance मैंने बता दिया, now displacement, boys and girls, what is meant by displacement, shortest distance between initial and final position। what is meant by displacement, shortest distance between initial and final position। shortest distance between initial and final position, ये डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट निकालता हूं बच्चों में,
Look here. Boys and girls, this is my initial position A. I travel. This is my final position. Point A, and this is my final position. This is initial position. And this is final position. Suppose, boys and girls, we have started our journey from point A and we travel through this direction, right? And we came here at this is our final position. Actual path we travel. What is meant by distance? Distance क्या होता है बच्चों? What is meant by distance? Actual path traveled by a body, whatever direction it is. Direction से कोई लेना देना नहीं है. Distance क्या होता है? Actual path traveled by body, by a body. Clear? Now here, how much path we have traveled? मान के चलो ये इतना travel जो किया. Clear? ये कितना है? मान के चलिए 100 किलोमीटर. How much path we travel? 100 kilometer. 100 kilometer. So the actual path traveled by us, that 100 kilometer, it is our distance. It is our distance. But means distance बच्चों हम लोगों को डायरेक्शन की यहाँ पर जरूरत नहीं. 100 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड बता दिया हमको. डिस्टेंस का मीनिंग 100% पता चल गया कि हाउ मच डिस्टेंस वी हैव ट्रैवल्ड. बट when someone says what is your displacement, इसी डायग्राम में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? What is the definition of displacement? Displacement is a shortest distance between initial and final position. भैया ये हमारा initial position है, this is our final position है. हम लोगों को shortest जाना है. shortest जाने के लिए is it shortest? आनंद, रितेश, पार्थ, बोलिए, is it shortest? No, this is not a shortest route. shortest जाने के लिए अब ये एक्चुअल हो गया. Is it shortest? अब ये यहां से ऐसा ट्रैवल किया. It is less than 100 kilometer, but still it is not a shortest. Still it is not a shortest. क्योंकि यहाँ पर कर्व है ना. Clear? So if we want to travel by means of shortest distance between A and B, then that time we have to move in a particular direction from A to B. अब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें जाने की जरूरत है. पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग कैसे जाएंगे? एक मिनट. पर्टिकुलर डायरेक्शन कैसे जाएंगे? हाउ वी कैन ट्रैवल पर्टिकुलर डायरेक्शन? वी हैव टू मूव स्ट्रेट. वी हैव टू मूव स्ट्रेट पाथ ऑन अ स्ट्रेट पाथ. तो स्ट्रेट पाथ कैसे ट्रैवल करेंगे बच्चों? जस्ट आई विल यूज दिस माय notebook as a register scale, right? As I travel from A to B through this direction, then that time straight direction, I have not changed my direction throughout the journey from A to B, then that time only we can achieve the shortest distance. बराबर है बच्चों? Is it shortest? मान के चलिए कि कंप्लीट स्ट्रेट पाथ है. स्ट्रेट है तो ये शॉर्टेस्ट होगा. सो हाउ वी कैन अचीव शॉर्टेस्ट पाथ? when we travel in a particular direction, when we travel in a particular direction
from A to B, then that time only we can achieve the shortest path between A and B. भैया इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही, कितना ट्रैवल किया हमने, मान के चलिए 20 किलोमीटर, कितना ट्रैवल किया 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. When we travel 20 kilometer in a particular direction, then that time only we can get minimum distance between A and B, and this is called as a displacement. ये क्या हो गया बच्चों? Displacement, right? Shortest, what is definition देखो ना displacement की क्या है? Shortest distance between initial and final position. Shortest distance between initial and final position. ये initial position है आपका, ये final position है, ये दोनों के बीच में when we travel in a particular direction, then that time only we can achieve the shortest path. अब उसका magnitude कितना है 20 किलोमीटर, उसका direction in this direction. So that's why displacement, to express displacement, we require magnitude and direction. But when we want to express distance, in that time actual path travel by body, फिर वो किसी भी डायरेक्शन में, हमें उससे कोई लेना देना है क्या डायरेक्शन से, नहीं. So distance, it is expressed completely by only magnitude, only magnitude. So boys and girls, on the basis of magnitude and direction, on the basis of magnitude and direction, physical quantities are divided into two types, which are that scalar and vector, right? So बच्चों, ये बेस है बच्चों, ये हम लोगों को मतलब ये समझ में आना चाहिए कि भैया हम लोग क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन किस आधार के ऊपर, on what basis we are dividing, right, it into two type, ये हमें समझ में आना चाहिए. When we divide any quantity or any concept in two type, three type, four type, right, then that time we must know on what basis we are dividing it. Clear? For example, बायोलॉजी का एग्जांपल देता हूं बच्चों. अमेरिकन साइंटिस्ट R.H. Whittaker, he classified the living organism into five kingdom Monera kingdom, Protista kingdom, fungi kingdom, plantae kingdom, animalia. भैया ये उसने डिवाइड किया, लेकिन किस आधार के ऊपर? On the basis of structure of cell, कि भैया सेल कैसे, whether it is developed or undeveloped, how many cells are present into the body of that living organisms, whether it is unicellular or multicellular, right? Then that cell, whether it is having cell membrane or cell wall, both are present or not, whether chlorophyll is present or not, means mode of nutrition कैसा करता है वो, whether it shows autotrophic mode of nutrition or heterotrophic or saprophytic mode of nutrition. Saprophytic mode of nutrition, it is shown by the fungi. Clear? Actually fungi का जो mode of nutrition होता है बच्चों, it is a heterotrophic, लेकिन as it lives on a dead and decaying part of the other living organism, then that type of nutrition is called as a saprophytic nutrition. So बच्चों, हम लोग डिवाइडेशन तो कर रहे, लेकिन किस आधार के ऊपर कर रहे, ये हमें पता होना चाहिए. So here physical quantities are divided into two types. On what basis? On the basis of
magnitude and direction. Magnitude and direction. These physical quantities are divided into two types. Clear? Which are that? Scalar quantities and vector quantities. Scalar and vector. What is meant by scalar quantities? What is meant by scalar quantities? Or what is meant by vector quantities? The physical quantities which are expressed completely by its magnitude only. डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. किसकी जरूरत है? हाउ मच, कितना लेंथ है, कितना लेंथ है, मान के चलिए 2 मीटर, 2 मीटर लेंथ, हमको उसका पूरा मीनिंग पता चल गया. हाउ मच मास, 15 किलोग्राम. हाउ मच मास, 7 ग्राम. हमको उसका पूरा मीनिंग चल गया, पता चल गया. राइट. वॉल्यूम ऑफ मिल्क, आधा लीटर मिल्क लिया हमने, 1 लीटर मिल्क लिया, पता चलता है ना उसका पूरा मीनिंग. सो फिजिकल क्वांटिटीज, these are expressed completely by its magnitude only. Magnitude only are called. Direction is not required. देखो यहां पर डायरेक्शन की जरूरत होती है क्या बच्चों? डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड. are called scalar quantities. Are called scalar quantities. Example: mass, density, speed, distance, temperature. Clear? These are the certain examples of the scalar quantities. पता चल गया बच्चों? Did you understand it completely? What do you mean by scalar quantities? Scalar quantities क्या होते हैं बच्चों? Scalar quantities are expressed completely by its magnitude only. Scalar quantity का मीनिंग प्राप्त होने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए उसका? बोलिए बच्चों. हेलो पार्थ, can you hear me? Boys, girls, what do you mean by scalar quantities? Which can be expressed by its only magnitude. डायरेक्शन की जरूरत है क्या बच्चों? No. So that type of physical quantities are called as a scalar quantities. उसे क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? Scalar quantities. These are called as a scalar quantities. And to express scalar quantities, हमें उसका सिर्फ क्या पता होना चाहिए? We must know its magnitude only. That quantities are called as a scalar quantities. Such type of quantities are called as a scalar quantity. Now we move toward the vector quantity की तरफ हम लोग चलेंगे बच्चों. ये vector quantities क्या होते हैं? Vector quantities are the physical quantities. If we want to express it, we require उसका magnitude तो हमें पता होना चाहिए कि how much. Magnitude means how much. वो तो हमें पता होना चाहिए, लेकिन direction is also required. Clear? Suppose
इफ यू आर अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी, भैया आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाया? इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, किधर लगाया? राइट। वेट, वेट क्या होता है? अर्थ पुल्स अस, भैया हम लोग वी लिव ऑन अर्थ, अर्थ पुल्स अस, हमें अर्थ किधर पुल करती है? टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑफ मास, टुवर्ड्स, ये मान के चलो अर्थ है, इसका सेंटर ऑफ मास इधर बीच में कहीं पे तो भी है, वी डोंट नो एग्जैक्ट पॉइंट व्हाट एवर दैट इज, लेकिन that point where that all the mass of the earth is centralized, that point is called as a center of mass. Listen, हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून हैज इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जुपिटर हैज इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, सन हैज इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, सैटर्न, मार्स, वीनस, नेपच्यून, ये राइट, ये सभी को उनका ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इनको ही है, you also has your own gravitational force, you applied it on the other object or other bodies which are present nearby you or which are present on the earth also, right? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों होता है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू हम लोग कॉमनली क्या करते हैं? G is equal to 9.8 मीटर सेंटीमीटर माइनस सेकंड पावर, right? On pole, south and north pole, it is more than this, 9.83 meter second minus second power. On equator of the earth, value of G is 9.78 meter second minus second power. This value of G, it is variable on earth because of the composition of the material through which that earth is made and its shape and size. तो भैया ये अर्थ का जो G है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू, राइट, समथिंग है, राइट। मून का 6 टाइम लेस है, जुपिटर का इससे ज्यादा है, सैटर्न का भी ज्यादा है। why any object or any body has its gravitational force? ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों होता है बच्चों, पता है आपको? किसी भी बॉडी के लिए बोलिए, रिप्लाई दीजिए। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनी बॉडी? हेलो, रिप्लाई दीजिए बच्चों प्लीज। मास ओनली, लार्ज नहीं, किसी भी, अब ये पेन है, it has its gravitational force. Why? Because it has mass. It has mass. So for gravitational force, बच्चों, for gravitational force of a body, what is responsible? Its mass is responsible. More the mass, more will be the gravitational force. As compared to moon, mass of earth is 6 times greater, so that's why gravitational force of earth is 6 times greater than or 6 times more than the gravitational force of the moon. gravitational force के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? मास। anything which has mass, it has its gravitational force, उसको उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों, फिर वो कुछ भी रहने दो, अंडरस्टैंड। और इसी के आधार के ऊपर न्यूटन ने उसका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया। एनी टू बॉडीज, सपोज वी आर हैविंग टू बॉडीज, बॉडी P and this is body Z. Body P attract body Z towards its center of mass. At the same time, Z body attracts body P towards its center of mass, जहां पर भी होगा। और ये दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, व्हाट एवर इट मे बी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass of P is m1, mass of Z is m2। दोनों में डिस्टेंस कितना है बच्चों?
मान के चलिए distance is d. So the force of attraction which is present body P and body Z, it is directly proportional to the product of their masses, and it is inversely proportional. This force of attraction which is present between P and Z, it is inversely proportional to the square of the distance. ये दोनों में कितना distance है, right? So equation number 1, equation number 2, we can combine it. Force is directly proportional to force of attraction which is present between these two. The force of attraction which is present body P and body Z, this is directly proportional to product of their masses. M1 it is mass of P, M2 it is mass of Z, and inversely proportional to the square of the distance. भैया हमें ये साइन निकालना है तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट देना पड़ेगा, और इसका कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल डायरेक्शन कांस्टेंट, दैट इज G. Its value is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square kilogram minus second power. M1 into M2 divided by D square. इसी के ऊपर ही लॉ बने वाला है. क्या कहता है न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट? Any two bodies which are present in the universe applies a force of attraction on each other, and the force of attraction which is present in between them, it is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance. Clear? तो कोई भी चीज हो रहने दो बच्चों इस यूनिवर्स में, it apply gravitational force, it has gravitational force, लेकिन कंडीशन क्या है? That body must have mass. That body must have mass. ठीक है ना? ये शॉर्टकट में बता दिया बच्चों मैंने आपको, हम लोग डिटेल लेंगे आगे जब भी इसका कंसेप्ट आएगा हमारे पढ़ाने में, ठीक है ना? सो बच्चों हम कहाँ थे, किधर थे बच्चों हम लोग? वेक्टर क्वांटिटीज, राइट? ये मजा आ रहा है कि नहीं रितेश, आनंद? अंडरस्टैंड हो रहा है बच्चों? बॉयज एंड गर्ल्स, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मीनिंग हमें प्राप्त होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसका डायरेक्शन भी चाहिए, दोनों चाहिए, राइट? अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे वो डिस्टेंस हो जाएगा, राइट? डिस्प्लेसमेंट हमें प्राप्त होने के लिए, समझने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए. अब शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मूव पर्टिकुलर डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड तो है भैया, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम कितना चले, हाउ मच वी ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो हो गया मैग्नीट्यूड. लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा तो डायरेक्शन भी जरूरी है. सो वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों की भी जरूरी होते हैं. वेक्टर क्वांटिटीज और these are expressed completely by its magnitude and direction. Anand,
Did you understand? Vector quantities क्या होती है? How we can define vector quantities? Vector quantities are the physical quantities which can be expressed completely by its magnitude and direction. Vector quantities are the physical quantities which can be expressed completely by its magnitude and direction. Example: displacement, velocity, force और टॉर्क. समझ में आ रहा है बेटा? These are the few examples of vector quantities. Did you understand? समझ में आ रहा है बच्चों? वही तो मैंने आपको होमवर्क दिया ना, लेकिन फिर भी मैं शॉर्टकट में बताता हूं. आप थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, कल इसके ऊपर मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा. See here, when we apply force on door, ये डोर है, it is connected to here wall. Clear? When we apply force on door, ये डोर के ऊपर बच्चों हमने क्या लगाया? फोर्स. We push the door. हमारे घर में हम लोग एंट्री करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? डोर को ऐसा ढकेलते हैं ना. We apply force on door. Am I right? तो उस समय when we apply the force on the door, in that time वो क्या आगे जाता है क्या? ऐसा बोलिए, आगे जाता है क्या? ऐसा स्ट्रेट जाता है क्या? आनंद, रितेश, पार्थ, when if we push the door, if we push the door, डोर को ऐसा पुश किया तो सीधा आगे जाता है क्या? The direction in which the force is applied, फिर क्या होता है? It rotate, ऐसा घूमता है ना वो कर्व में in a particular direction. So the force which has been applied by a body, and if the body rotate around its axis or around any point, then that force is called as a torque. अब वो फोर्स नहीं है, वो फोर्स का एक टाइप है, लेकिन इट इज कॉल्ड एज अ टॉर्क. टॉर्क के कारण क्या होता है बच्चों? बॉडी क्या होती है? रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस. अब इसका एक्सिस क्या हो गया? ये. क्लियर? राइट? इट विल रोटेट लाइक दिस. अगर उधर से फोर्स लगाया, इट विल रोटेट लाइक दिस. बराबर है क्या बच्चों? राइट? When we apply a force on a body, and if the body rotate around its axis or around a particular point, then that force is called as a torque. Clear? ठीक है ना? इसको थोड़ा आज गूगल के ऊपर सर्च कीजिए बच्चों. वैसे तो 9th स्टैंडर्ड में है हमको पढ़ाने के लिए पीयर सर में. ठीक है ना? Did you understand it? Okay? अभी हम लोग इसको रब करेंगे. Now boys and girls, ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं, these are again divided into two types. Physical quantities are again divided into, ये तो एक टाइप का उसका डिवाइडेशन हो गया. We divided physical quantity into two type. On what basis? किस आधार के ऊपर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया बच्चों? On the basis of direction. अब और एक डिफरेंस है फिजिकल क्वांटिटी में, राइट? वी कैन डिफरेंशिएट इट, लेकिन उसका आधार क्या है? Whether to the value of that physical quantity
it depend on the other physical quantities or not, right? Whether that physical quantity, अब बच्चों हम लोग 1 kilogram of mass, मान के look here, 1 kilogram of mass क्या होता है? साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? They met in one international summit, right? और वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि भैया एक हम लोग क्या करेंगे, प्लैटिनम एंड इरिडियम, राइट? प्लैटिनम एंड इरिडियम, these are the two elements. ये दो एलिमेंट का उन्होंने क्या किया, एक एलॉय बनाया, certain lump, it is having certain amount of mass in it, जो भी होगा, और उन्होंने फिक्स कर दिया कि भैया ये 1 किलोग्राम है, ये क्या है, 1 किलोग्राम. Then they divide that mass into 1000 equal part. और इसमें से 1 part, that is 1 gram. इसका मल्टीपल यूनिट 100 times 1 quintal, 1000 times 1 ton, right? Then सब मल्टीपल मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, ये यूनिट निकाल लिए उन्होंने, राइट? लेकिन ये जो वैल्यू मिली हमें 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मास, 1 किलोग्राम मास, इसके लिए हमें whether we have to calculate, we have to do the calculation between other physical quantities, जैसे कि समझो force, acceleration, velocity, speed, torque, power, length, temperature, amount of substance, candela, mole, amount of substance क्या है, mole, उसका candela, intensity of light, ऐसे कोई other physical quantities भी involve हुए क्या? नहीं हुए क्या बच्चों? नहीं हुए ना? तो it's a value of mass, it is decided by the scientist. Value of 1 second time, it is fixed by the scientist. Value of the 1 mole of substance, it is decided by the scientist. अब बोले सर वो कैसे डिसाइड किया? उन्होंने क्या किया? फॉर एग्जांपल और एक बताओ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट है, when we want to come, amount of substance is physical quantity, amount of substance क्या है बच्चों? Physical quantity. When we want to calculate it, count it, measure it, in that time we have to compare it with other standard quantity, and which is called as its unit. इसको हमको कंपेयर करना है अदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए, और अदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? मोल. क्या है? मोल. When we want to compare, when we want to calculate, when we want to measure amount of substance, in that time we have to compare it with other standard quantity, which is called as its unit, और इसका यूनिट क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, राइट? अब बच्चों 1 मोल मतलब कितना होता है? अब 1 मोल का वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए, then only we can measure amount of substance, then only we can measure. अब मेजर करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? दूसरे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. उन्होंने क्या किया? They took 12 gram mass of carbon 12 isotope. Carbon 12 isotope. What do you mean by isotope? Anand, Ritesh, Parth. What do you mean by isotopes? Isotopes are nothing but these are the atoms of the same element having same atomic number but different atomic mass number.
ये क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम होते हैं, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। भैया सेम एलिमेंट के एटम होने के बाद में उनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, लेकिन उनका एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट। फॉर एग्जांपल लुक हियर, अब सी हियर बॉयज गर्ल्स, carbon, into the central part of the carbon two types of particles are present. One is positively charged, one is chargeless, which is called as a nucleus. Around nucleus in various orbit इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। तो भैया कार्बन में 6 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी तो 6 ही होंगे। every atom is neutral in nature. Why? Because it contain same number of proton and electron. भैया इसमें देखो आप, how many protons are there? Positively charged proton 6, neutron 6, electron first orbit 2, second orbit 4, so negatively charged होते इलेक्ट्रॉन वो भी 6 है, right? What is mean by atomic number? atomic number क्या होता है बच्चों? It is denoted by letter capital Z. इसका atomic number 6 है कार्बन का, right? What do you mean by atomic number? The number of proton or electron, either proton or electron दोनों में से कोई भी एक is called as atomic number of element. लेकिन atomic mass number क्या होता है बच्चों? आनंद रितेश दोनों में से बोलो, डेफिनेशन बोलो। आनंद you tell first. आनंद तो गलत आंसर है, लोग कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन मी व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक मास नंबर, बोलिए बेटा जो भी आपको समझ में आए। नंबर ऑफ प्रोटॉन, रितेश कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक मास नंबर, बोलो बेटा। रिप्लाई फास्ट, थोड़ा सा रिप्लाई जल्दी जल्दी दीजिए। पता है आपको अब इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है? पार्थ यू टेल व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एंड चलो ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब मैं आपको बताता हूं क्लोरीन का एटम बच्चों, इट इज 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन, the nucleus of chlorine, proton 17 है तो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी 17, फर्स्ट ऑर्बिट 2, second orbit 8, third orbit 7, this is a chlorine 35। क्लोरीन का नेचर में और एक एटम मिलता है दैट इज कॉल्ड एज क्लोरीन 37, इट हैज 17 प्रोटॉन। भैया क्लोरीन का एटम होने के बाद में उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन्स आर 20, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड ऑर्बिट 8 and last orbit 7. This is called as a chlorine 37 atom. Atom of chlorine 37 isotope. These are the two isotopes of chlorine. What is meant by isotopes?
Isotopes are nothing but atoms of same element having same atomic number 17 17, इलेक्ट्रॉन भी 17 17 है, तो दोनों का भी एटॉमिक नंबर तो 17 ही होगा। इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है? Z is equal to 17। इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है? 17। लेकिन व्हाट इज मास ऑफ दिस एटम ऑफ क्लोरीन? मास हम कैसे काउंट करेंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 17 प्लस 18 कितना होता है? 35। और इसका एटॉमिक मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना होता है? 37। लेकिन अब मजे की बात है बच्चों, जब हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास नंबर ऑफ क्लोरीन, क्या कहते हैं? when we try to find out or when we try to give the answer of what is the atomic mass number of chlorine, clear? ये देखो atomic mass of chlorine, तो हम कितना लिखते हैं? 35.5। ये तो आपको पता होगा बच्चों क्लोरीन। तो ये कहां से लाए थे? How we obtain it? From where we got it? ये हमें कहां से मिला बच्चों? क्या होता है जनरल हम सब लोग एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर मतलब क्या कहते हैं? बट हाउ वी कैन डिफाइन एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर मींस, इसका डेफिनेशन क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एटॉमिक नंबर मतलब व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट? the number of proton or electron which are present in its atom is called as atomic number। लेकिन जब हम लोग एटॉमिक मास नंबर कैपिटल ए रिप्रेजेंट एटॉमिक मास नंबर, कैपिटल ए रिप्रेजेंट एटॉमिक मास नंबर, कैपिटल जेड रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। सो बच्चों एटॉमिक मास नंबर जब हम कहते हैं then that time how we can define the number of proton and neutron present into the center part of atom, that is called as the nucleus is of an element, is called as atom of an element, right? Is called as a atomic mass number। लेकिन ये रॉन्ग है भैया, इस एटम के लिए इसका एटॉमिक मास नंबर 35 है। दिस इज अनदर एटम ऑफ क्लोरीन, इसका एटॉमिक मास नंबर 17 + 20 37। ये भी क्लोरीन का ही एटम है, इसका एटॉमिक मास नंबर 17 + 18 35। लेकिन जब हम लोग ओवरऑल क्लोरीन एलिमेंट की बात करते हैं दैट टाइम एटॉमिक मास नंबर ऑफ क्लोरीन हम लोग क्या कहते हैं? 35.5। ये तो डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये 35.5 है क्या? इट इज नॉट 35.5। सम ऑफ 17 and 20 it is also not 35.5। then how we can define? भैया हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? right? see here what you must tell this। आपको हमने बताया था एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक mass number, it is denoted by letter capital A। ये क्या होता है? the number of, अब ये the number नहीं, एवरेज लेना पड़ेगा हमें। the average number of proton and neutron present in, कि भैया ये नेचर में क्लोरीन के कितने एटम्स है,
कौन से टाइप के एटम्स है, डिफरेंट टाइप्स के, वो सभी का एवरेज निकालना है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल पॉसिबल मींस आइसोटोप्स है या नहीं है पता नहीं, जो भी है, पॉसिबल टाइप्स ऑफ atoms of an element is called atomic mass number. आप बोलेंगे सर ये एवरेज कहां से लाया आपने, राइट? सीएन बॉयज एंड गर्ल्स, ये डेफिनेशन ये 35.5 के साइड है। इन नेचर element chlorines, two types of atoms are found. One is called as a chlorine 35 and one is called as a another one is chlorine 37. लेकिन इनका प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चों? इनका प्रोपोर्शन होता है, नेचर में हम लोगों को जब 35 के 3 एटम्स मिलेंगे, in that time we'll get 1 atom of chlorine 37. This is the ratio of these two different atoms of chlorine, which are called as isotopes. Which are called as isotopes. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको. What do you mean by isotopes? Isotopes are nothing but these are the atoms of the same element, having same atomic number 17, but different atomic mass number are called as isotopes. What do you mean by isotopes? Isotopes are nothing but these are the atoms of the same element having same atomic number but different atomic mass number. Clear? Now बच्चों, अब क्लोरीन की ये 2 आइसोटोप मिल रहे हैं हमें, क्लियर? एक है क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. इन नेचर क्लोरीन 35 के जब 3 एटम मिलते हैं, that time क्लोरीन 37 का एक एटम नेचर में प्रेजेंट होता है. उनका जो रेशियो है 3:1. अब इसको हमको क्या करना है? We have to find out the atomic mass number. अब atomic mass number क्या होता है? Average number of proton and neutron present in all possible types of atoms of element in nature, whatever it may be. अब क्लोरीन के all possible types of atom कितने हैं? 2 है, 35 और 37. 35 के जब हमको 3 मिलते हैं तो 37 का 1 मिलता है. So इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? 35 के 3 प्लस 37 का 1. इसका एवरेज निकालना है. टोटल एटम 3 प्लस 1, 35 3 जा 105 plus 37 on the 37 divided by 3 plus 1 4. टोटल कितना हो रहा है? 142 divided by 4. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, carry 2 and this 2 22, 4 5 जा 20, 22 minus 20 2 remain. Give here point. ये क्या हो गया? 20. 4 5 are 20. So average atomic mass number of chlorine कितना आ गया बच्चों? 35.5. Understand, रितेश, आनंद? तो ये ऐसा एवरेज करके निकालते हैं हम लोग. क्लियर? हम लोग थे एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी के इसमें फिजिक्स में थे. राइट ऑन इट. आई एम गोइंग टू रब इट. शैल आई रब दिस ऑल फिगर? नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, ये मेरी आदत है पढ़ाते समय बॉयज एंड गर्ल्स बोलने की है.
स्कूल में मैं ऐसे बोलता हूँ। सो बच्चों, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में थे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हमारा सब्जेक्ट क्या चल रहा था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या है? मोल। ये शॉर्टकट हो गया, शॉर्ट फॉर्म, एंड दिस इज फुल फॉर्म, राइट? तो बच्चों, अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये क्वांटिटी है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये क्वांटिटी, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया भैया, 1 मोल मीन्स कितना? 1 मोल, ये हमें पता होना चाहिए। वी वांट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब कैलकुलेट करते हैं तो देन दैट टाइम वी कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दैट इज व्हाट एज अ मोल। सो बट लेकिन व्हाट इज मीन बाय 1 मोल? 1 मोल क्या होता है? तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, 12 ग्राम मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप लिया। कितना लिया? 12 ग्राम। अब इसमें हाउ मेनी carbon atoms are present? क्लियर? कार्बन का कौन सा आइसोटोप लिया? they took carbon 12 isotopes. Carbon is having carbon 3 different types of isotopes, हमको पता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। सो उसमें से कौन सा लिया उन्होंने? कार्बन 12 आइसोटोप। they took the carbon 12 isotopes, and in that, as they have taken the carbon 12 isotopes, लेकिन how much mass of that carbon 12 isotope they took? 12 gram. now 12 gram carbon 12 के आइसोटोप में how many number of carbon atoms are present? That is called as 1 mole. That is called as 1 mole, and it is equal to Avogadro number, right? It is equal to Avogadro number. और कितना है Avogadro number? क्या ले लो? यस, ये कितने कार्बन के एटम होते हैं 12 ग्राम में? 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप में कार्बन के कितने, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट? 6.02 into 1023 कार्बन एटम्स होते हैं। This number is called as a 1 mole, right? Now, अब 1 mole of water लिया हमने, मान के चलिए 1 mole of water। अब 1 mole of water मींस ये बताऊंगा बच्चों केमिस्ट्री में, H2O, इसका मास 1 प्लस ऑक्सीजन 16, टोटल कितना आएगा 18। तो हमें कितना लेना पड़ेगा H2O? 18 ग्राम। 18 ग्राम H2O में H2O के पार्टिकल्स इतने होते। सो व्हाट इज बाय 1 मोल? साइंटिस्ट लोगों ने फिक्स किया भैया 12 ग्राम कार्बन लीजिए, 12 ग्राम ऑफ कार्बन टेक एंड काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, दैट इज 1 मोल। इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस, वेदर लेंथ, टेम्परेचर, फोर्स, डेंसिटी, ऐसा कुछ अदर फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेट, ऐसा कुछ इसमें इन्वॉल्व हुआ क्या? नहीं।
या दूसरे कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी का डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये कुछ करना पड़ेगा इसमें? नहीं। साइंटिस्ट लोगों ने फिक्स कर दिया व्हाट इज मीन बाय 1 मोल, द नंबर ऑफ, इसका डेफिनेशन देखिए बच्चों, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स right of any substance equal to the number of carbon atoms that are present in 12 gram of carbon 12 isotope. Clear? What I mean by 1 mole? कि भैया किसी भी सब्सटेंस के का सर्टेन मास जिसमें वो सब्सटेंस के पार्टिकल, दैट में भी मॉलिक्यूल और दैट में भी एटम्स होंगे. क्लियर? किसी भी सब्सटेंस के हाउ मेनी एटम्स और हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, जितने की कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में कार्बन के एटम्स होते हैं. अंडरस्टैंड? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंटिटीज, एटम्स, molecules of any substance which are equal to the number of carbon atoms that are present in 12 gram of carbon 12 isotope is called 1 mole. Is called isotope. Is called 1 mole. क्लियर? सो बच्चा हमें 1 मोल का वैल्यू मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया हमें. वी गॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ द 1 मोल कि भैया कार्बन 12 आइसोटोप लेना है. कितना लेना है? 12 ग्राम, 12 ग्राम. एंड वो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के आइसोटोप में कार्बन के कितने एटम्स होते हैं, जो भी नंबर आएगा दैट इज 1 मोल. दैट इज 1 मोल. अब हमने समझो HCl लिया. HCl, अब इसका 1 मोल कैसे फाइंड आउट करना है? एटॉमिक मास का एडिशन करो. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन अभी हमने निकाला 35.5, सो टोटल 36.5, राइट. तो 36.5 ग्राम अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो दैट 36.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कंपाउंड, तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा? मॉलिक्यूल. तो इतने मॉलिक्यूल होते हैं HCl के. वाटर इज कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूल होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच शोज द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट H plus CH plus O. Atomic mass of hydrogen 1. Another hydrogen atoms atomic mass 1. Atomic mass of oxygen 16. Total 18. ये 18 को कन्वर्ट करो ग्राम में तो क्या हो गया? वाटर 18 ग्राम. 18 ग्राम वाटर में वाटर के 6.023 into 23 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं which are equal to the number of carbon atoms which are present in 12 gram of carbon 12 isotopes. That is 1 mole of water. 1 mole of water means 18 gram of water. 1 mole of HCl 36.5. 1 mole of carbon 12 gram. 1 mole of carbon कितना होता है? 12 ग्राम. क्लियर? तो अब ये जो वैल्यू है मोल की, ये बताऊंगा बच्चों केमिस्ट्री में डिटेल और लेंगे हम लोग. ये 1 मोल
एज वी गॉट द वैल्यू ऑफ द 1 मोल, इसमें हमने कोई कैलकुलेशन किया क्या? दूसरे फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, टेम्परेचर, फोर्स, ये इन्वॉल्व है क्या? वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। हेलो, नो, नहीं है क्या? नहीं है। आप बच्चों नाउ बॉयज एक 10 मिनट लेंगे, डिफाइन करके छोड़ देता हूं, ठीक है ना? बैटरी खत्म हो गई? चलो बच्चों, विल स्टॉप, विल मीट टुमारो, ठीक है? या आज मैं थोड़ी देर के बाद फोन करता हूं आपको, थोड़ी देर के बाद में मिलेंगे।